perovskite solar cells. These are the new type of the solar cells researched by the Australian as well as Chinese research ने किया है. In this type of the solar cell, they are the highly efficient solar cells. If initially in the normal solar cell, the efficiency rate is only the 4 to 5%. Efficiency rate means they convert the solar energy to the electrical energy only to 4 to 5%. But in this type of the solar cell, the efficiency increased up to the 22.6%. 22.6% in these perovskite solar cell. Anybody can tell the which metals the solar cell किससे बने हुए होते हैं? Silicon. उसमें voids में we as a impurity क्या क्या use करते हैं in the making of solar cells? Gallium. Gallium is the major impurity which used in the solar cells. So now the new type of the solar cell, perovskite solar cell, used researchers by the Chinese researchers and the Australian researchers. It's having a high efficiency, but it's the less stable. Efficiency बहुत ज्यादा है, लेकिन stability नहीं है. So industrial use में अभी नहीं हो सकता. So research is going on there. But they are the fabricated nitrogen doped titanium oxide से होते. Like the normal solar cell is doped with the gallium. These are doped with the nitrogen doped titanium metals के doping होती है, जिसके through they can increase the efficiency in the solar cells. So इसके बारे में देख लेते हैं. These are made up of the organic or inorganic tin based materials. So there is a difference between the metals used in the formation of the normal solar cells and the metal used in the formation of the perovskite solar cell. The metal used in the form of inorganic and the tin based materials specifically used होता है in the formation of this type of the solar cells. And also the methyl ammonium lead halides and the cesium lead halides are other materials which are help in the formation of these type of the cells. इसका एक drawback है because the lead is used in these cells and lead is known as the toxic for the human being. जो lead formation की वजह से these are toxic इनको बोला जाता है, and there is more research is going on so that the lead can be replaced with the other type of the metals there. So this research is going on. हाँ, this is the most efficient we can say. The अभी जो solar cells हम लोग use कर रहे हैं, the efficiency is near about the 4 to 5%. But these are the highly efficient, up to the 25% is the efficiency. So there is a huge difference between the efficiency. But अभी इनको industrial use में नहीं लेके आया गया है due to the instability of this type of the solar cells. Other advantage are that these are the cheaper. Production is cheaper. Production is cheaper than the normal solar cells जो होंगे उनसे production cheaper होगा. Lightweight होंगे. These are lightweights, high efficiency and the low cost. Low cost, high efficiency and the lightweights होंगे, and the material is capable of absorbing the entire visible spectrum. जो major difference है दोनों solar cell में and the perovskite solar cells में, the normal solar cell are not able to absorb the all the lights present in the spectrum, whereas this type of the solar cell absorb all the lights in the visible spectrum, so that the region of the efficiency is here. जो absorptions होगा light का, ये ज्यादा light absorb करेंगे तो efficient ज्यादा होंगे, whereas normal solar cell are not absorbing all the lights in the visible spectrums. They're also reflecting back some of the lights there. So that's why the region of efficiency is also the absorptions of the all the visible light spectrum में जो lights होंगे उसको absorb करेगा. तो structures इसमें mainly आपको structure याद नहीं रखना है. It's a mainly form of the ABC. तीन तरीके से बना हुआ होता है. एक cations होते हैं, B anions होते हैं, and X is the halogens. Halogen material से मिलके ये बनता है. Any example of halogen? Halogen groups कौन से होते हैं? Chlorine, chlorine, bromine, iodine. These are the halogen group जिसके through they are making a जो इनका structures बनता है perovskite cells का. तो मेनली एक एनायन, एक कैटायंस एंड एक हेलोजेंस होते हैं. एनायन एंड कैटायन फॉर द लाइक दे इन द लाइन में जो होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के फॉर्म में दे जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर एनर्जी. और जो हेलोजेंस ऐड होते हैं दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सेल्स. तो उनको एज अ इंप्योरिटी ऐड किया जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सेल्स. लेसर द बैंड गैप द हायर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जितना ज्यादा impurities gap होते हैं उनके अंदर उनका band width उतना कम हो जाता है and also increase the conductivity of the cells. So this is the question on the perovskite solar cell. Try to attempt the question. Read all the 4 statements here and try to answer it. They are the less stable compared to the photovoltaic technology. They can decompose when they react with the moisture and oxygen or when they spend the extended time exposed to light and the heat. Perovskite is made up of organic or inorganic tin based material. These cells are mainly used for the powers, the Internet of Things and the wireless electronics. Answer is D here. All the statements are correct about the perovskite solar cells. Industrial use में electricity productions में नहीं use हो रहा. Electricity productions में they are not used. Internet of Things, wireless electronics में अभी start हो गए हैं इनका use. Wireless electronic like जो smart watch अब use कर रहे हैं. Smart watch में use हो गया. Even in the case of the we can say कि
इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एज अ लाइक बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जब आप इंटरनेट का ट्रांसमिशन करते हैं तो बीच में यू नीड सम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर जनरेशन विद हाई एफिशिएंसी, तो उस केस में वहां पे इनको यूज किया जाने शुरू हो गया इन द केस ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। आईओटी डिवाइसेस को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सैटेलाइट के केस में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ द सोलर सेल्स देयर। लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टेबिलिटी नहीं है, इनको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। These are the not stable there. So we can see the issues क्या हैं? They are less stable compared to the photovoltaic technology. Can decompose when they react with the moistures and the oxygens. And the solar cell are mainly used to power Internet of Things and the wireless electronics. It also helps to mitigate the climate change को में भी help करेंगे because they are the efficiency high होने की वजह से mitigate the climate change में they will help. तो इसमें mainly आपका जो questions frame होगा, one type of the question that can be asked, the 4 statement question. Other type the applications can be asked. And the third type is the difference between the normal and these photovoltaic cells. Like they ask the question on the VR and virtual reality and augmented reality. So consider the following statement with reference to these type of solar cell and the photovoltaic solar cells. What is the difference between these type of cells? That can be asked here. हाँ, तभी तो इनको मोस्टली जहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वहां पे इन टाइप को यूज नहीं किया, क्योंकि इट्स नॉट लाइक जैसे ही हमने इसको स्टार्ट करना यूज किया इतना जल्दी डिग्रेड नहीं होते, बट लाइक नॉर्मल सोलर सेल कैन रन अप टू द 10 years 12 years 15 years, दे कैन रन अप टू 2-3 years। उसमें जो मेटल्स यूज हो रहे हैं मेनली उसके डिग्रेड होने की वजह से, लाइक लेड एलिमेंट यूज हो रहा है, हेलोजेंस यूज हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ वो इजिली रिएक्टेबल है, तो जैसे वो इजिली रिएक्टेबल होने की वजह से वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट, मतलब बहुत बड़ा यूज नहीं है, बट कैन बी यूज इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स।